Now the complicated part starts. That is DNA replication, then transcription, translation, functioning of DNA, genetic code, gene expression. तो बस एक बात ध्यान में रखेंगे कि अभी तक जो हमने सीखा डीएनए का स्ट्रक्चर, उस पे आने वाले प्रॉब्लम्स, ये हमको बहुत अच्छे से आने ही चाहिए, तो ये चैप्टर में आपको मार्क्स लाना बहुत आसान होगा। रेप्लिकेशन में एंजाइम्स ध्यान में रखो और डायरेक्शन, बाकी सब चीजें आसान है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एट सिंपल थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझनी है। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ से यहाँ तक हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हेलिक्स रिमूव हो चुका है और यहाँ पे डीएनए अनकॉइल हुआ है, यहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस चल रही है और यहाँ पे रेप्लिकेशन कंप्लीट हुआ है। So all that can be best studied when you know the structure, right? So eukaryotic DNA is a linear DNA, prokaryotic DNA is a circular DNA. This is a diagram of forked DNA replication which is found in eukaryotic cell. Forked is Y-shaped. You must have seen the tuning fork in physics practicals, right? So it is like Y-shaped. So this is a forked DNA replication found in यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन को थीटा रेप्लिकेशन बोलते हैं। विल सी दैट। यू नो दैट यूकैरियोट्स हैव लिनियर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकली कॉइल्ड डीएनए। Okay, so let us discuss the type of replication on the basis of the structure given by Watson and Crick. As we said, Watson and Crick get Nobel Prize because their structure was able to express the process of DNA replication. So these are the two strands helically coiled, anti-parallel. So this is 3' end, this is 5' end. Obviously, अगर हम 3' strand को continue करेंगे, तो it will be its 5' end. Okay, अगर हम इसको 5' end को continue करेंगे, then it will be its 3' end. Right? So two strands start separating from a point called origin. As eukaryotic DNA is very long, there are many origins on the eukaryotic DNA for rapid DNA replication. DNA replication occurs in each dividing cell. It may be performing meiosis or mitosis. DNA replication starts and completes in S phase of interphase. Even a prokaryotic cell, which is going for amitosis, performs DNA replication. But DNA replication in eukaryotes is very systematic. Replica is exactly produced and it starts and completes in S phase of interphase. थोड़ा cell cycle याद करके देखो, try to recollect the points of the cell cycle, that among the entire process, interphase preparatory phase is the longest, and in the interphase, G1 is longest and second longest phase is S phase. मतलब cell cycle में time consuming क्या है? तो S phase है. तो S phase में DNA replication start होगा और complete होगा. S phase के पहले DNA बनाने के लिए ये जो नए न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं, ये बनेंगे. So G1 is cell's growth. It reaches cell growth हो गया, cell check point पे पहुंच गया. सेल ने डिसीजन लिया कि लेट अस गो फॉर डिवीजन, देन इट स्टार्ट प्रिपेयरिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स. इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंजाइम्स एटीपी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. राइट? सो प्रिपरेशन चेक पॉइंट के आगे शुरू होगी, नए न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे एंड इन एस फेज दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विथ एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. फर्स्ट स्टेप of DNA replication is activation of nucleotides. It occurs obviously in nucleoplasm because DNA is master molecule present in nucleoplasm. So first DNA nucleotides are activated. Adenosine monophosphate converted to adenosine triphosphate. Adenosine monophosphate converted to adenosine triphosphate. Then GTP, CTP, then TTP are formed by activation of nucleotides. So activated nucleotides are present in the cytoplasm. In the nucleoplasm in eukaryotes, cytoplasm will be in prokaryote. Nucleotides are activated and simultaneously the DNA is cut at origin. सब लोग क्लास वर्क निकालो. क्लास वर्क में मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप वाइज डायग्राम उतार के दिए हैं. At origin, the first enzyme which is coming and cutting the phosphodiester bond is endonuclease. Right? Okay, endonuclease cut the phosphodiester bond. DNA uncoils. We say sir uncoil. Right? So the helix will be removed and it will be easy for DNA to get separated.
तो ये 2 स्ट्रैंड का सेपरेशन शुरू होगा जब एंडोन्यूक्लियस ने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया, तो 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। एंडोन्यूक्लियस का काम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ना और पहला हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। उसके बाद अनकॉइलिंग शुरू हो गया। देखो यहाँ पे हमको डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मिल रहा है। ओके, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के बाद कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का काम हेलिकेज करेगा। So first enzyme active is endonuclease cutting DNA at origin. Second is helicase continuously breaking the hydrogen bonds present between the two complementary strands of the DNA and it proceeds in 5 to 3 direction. देखो ये strand का orientation, right? Okay, so it will continue in its 5 to 3 direction. So hydrogen bond तोड़ते जाएगा one by one, one by one, one by one. Breaking hydrogen by one is easy. Okay, as we said, many hydrogen bond giving stability, but breaking the hydrogen bond one by one is again making the DNA replication easy. So जैसे ही हेलिकेज 5 to 3 डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, हमको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलना शुरू हो जाएगा, right? Now on the single strand, DNA polymerase will attach. Prior to that, RNA primer is synthesized. Okay, so first nucleotide which is added to initiate the synthesis of new strand on the template is addition of RNA nucleotides. Okay, RNA nucleotides से बना बनाया एक RNA primer रहेगा. So RNA primer will be added with the help of enzyme RNA polymerase, which is DNA dependent RNA polymerase, and after that DNA polymerase will start adding complementary activated nucleotides. समझ रहे हो, right? So see, this is a strand, this is a strand. Okay, यहाँ पे हम 2 शब्द यूज करते हैं, leading strand and lagging strand. Always remember, DNA replication starts with respect to itself in 5 to 3 direction. बराबर? So see, ये ligase है, sorry, ये हेलिकेज है जो 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है। ये हेलिकेज को फॉलो करने वाला स्ट्रैंड ये लीडिंग स्ट्रैंड है जो खुद के 5' एंड पे शुरू होगा। न्यू बायोमोलिक्यूल्स आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन द डायरेक्शन 5 to 3, तो खुद के 5' एंड पे आरएनए प्राइमर ऐड हो गया एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड। दिस एडिशन इज डन बाय DNA polymerase and it continuously follow the helicase. Helicase जैसे आगे जाएगा, जैसे ये भी आगे 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 चलता जाएगा। So this diagram is mainly for highlighting the requirements. DNA replication के लिए क्या क्या लगता है? You need a DNA template. Template is the one who guides. Then you need activated nucleotides. RNA nucleotide to synthesize RNA primer. RNA primer बनाने वाला enzyme primase, DNA dependent RNA polymerase. Right? Then you know require helicase. Helicase जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, एंडोन्यूक्लियस जो ओरिजिन से कट करके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ता है और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। Here you get single stranded DNA. तो ये जो पर्पल कलर के बॉल है, they are single strand binding protein, SSB protein, are binding the single stranded DNA and making it stable. What you require is DNA polymerase. Different types of DNA polymerase are there. Types हम देखते हैं. So these are DNA polymerase enzyme. DNA polymerase work always in 5 to 3 direction. So खुद के 5' एंड पे काम शुरू करेगा नया डीएनए स्ट्रैंड जो टेम्पलेट के 3' एंड पे होगा। देखो खुद का 5' एंड, टेम्पलेट का 3' एंड, खुद के 5' एंड पे डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ, आरएनए प्राइमर ऐड हुआ, फिर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते 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 राइट डीएनए पॉलीमरेज टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क ग्रो हो रहा है। तो ऑन दिस स्ट्रैंड टेम्पलेट से 3' एंड, ओके, new strands 5' end, DNA replication starts in 5 to 3 direction towards the fork. Okay, after some time on the other strand DNA replication starts near the fork by addition of RNA primer. Then DNA polymerase go on adding new nucleotides in 5 to 3 direction, right, of its own.
ओके, देखो ये इसका 5' एंड है और नए स्ट्रैंड का ये 3' एंड है, राइट? ओके, so the strand on which the DNA replication starts first is leading strand and the strand on which DNA replication starts later is lagging strand, right? So एंजाइम के नाम और एक बेसिक आइडिया हमको ये डायग्राम से मिली। आपके जो बुक में डायग्राम है उसको अब डिटेल में देखते हैं। See, this is the diagram from where we started discussing DNA replication. Originally, double-stranded blue DNA is following the process of DNA replication. It has 4 origins, 1, 2, 3, 4. Imagine it has 4 origins. At origin, endonuclease will come, will cut the phosphodiester bond, so DNA will uncoil, and now the enzyme helicase, which is represented by red arrows, will start working on 4 origins. The blue strand is parental one. Here, helicase will start opening it. Helicase moving bidirectionally. Look at the heads of the arrow. This helicase is moving towards the right. This helicase is moving towards the left. Same thing, right, left, right, left, right, left. So 4 replication. Origin will develop 4 replication bubbles. As replication bubbles are opening up, on the blue parental strand, red daughter strands are synthesized. That too bidirectional. So because of activity of helicase, DNA replication is always bidirectional. As the bidirectional DNA replication proceeds, the replication bubble open up and now it will develop into replication fork. So each origin will be having 2 replication forks. So 4 replication bubble will be having 8 replication fork. As the process proceeds, if you focus on this replication bubble, here the helicase will continue the opening, new strands are synthesized towards the fork, right? So blue-red strand synthesis will go towards the fork. Okay, this replication will go towards its right. This replication bubble will grow towards its left, and ultimately it will join at the mid. So this new red strand will get connected to red new strand, and the blue is already intact. So as the process continues, you are getting this parental blue strand on which new red strand is synthesized, again the other red new strand and the parental blue strand. So you are getting blue red, red blue. This is double-stranded DNA number 1. This is double-stranded DNA number 2. So each daughter DNA has 50% old and 50% new, and the process is semi-conservative DNA replication. Now we focus on one replication bubble. इसके पहले जो हमने डायग्राम देखी थी वो फोर्क रेप्लिकेशन की ही थी। अब उससे डिटेल एंजाइम के पोजीशंस देखते हैं। See this diagram explaining every detail. As we said, this is forked replication. तो ये है replication fork जो इसको represent करता है, where replication had just now started. If it continues, it will appear like this. So focus on this diagram. If it is magnified, it will appear like this. So this is double-stranded parental DNA. This is double-stranded parental DNA. Here the two complementary nucleotides are still paired. Helicase is working over here. It is breaking the hydrogen bond between the complementary nucleotides. The two separated parental DNA are stabilized by SSB protein, right? Here at its own 5' end, RNA primer is added. Here at its own 5' end, RNA primer will be added bit later. So here replication starts first. So it is leading strand. As RNA primer is added, this is 5' end of that nucleotide. This is 3' end of the last nucleotide added. अभी ये nucleotide add हुआ है. To this RNA primer, now new nucleotide is added. See, this is a diagram showing activated nucleotide. Sugar, 3-phosphate, nitrogen base. Okay.
So sugar plus nitrogen base but phosphate. So it is either ATP or GTP or CTP or TTP. This activated nucleotide with 3-phosphate will go and reach here. Here 2-phosphate are given out, energy is released, and now this energy is utilized for the bond formation. New nucleotide and old nucleotides are connected to each other by phosphodiester bond. सेम डीएनए स्ट्रैंड के दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं. हाउ दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन अकर? Old nucleotides 3' end will start forming new phosphodiester bond and get connected to the phosphate. As I said, 3-phosphate यहाँ पे है, 2-phosphate निकल जाएंगे और ये अब रहेगा AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ओके, अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड थाइमिन है तो ओके, सो ये थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन रहेगा. एडेनिन ने 2-phosphate छोड़ दिए, फिर बच्चे वाले फॉस्फेट के साथ ये 3' कार्बन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा. सो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस स्टार्ट्स एट इट्स 5' end, continue towards 3' end. For this leading strand formation, the phosphodiester bond will start synthesized from 3' end of the previous nucleotide to the 5' end of new nucleotide. Same thing happen on lagging strand. यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ गया है, राइट, और आरएनए प्राइमर के 3' end पे ओके, यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता रहेगा. सो जस्ट डिस्कस दिस. ओके, सो एक ही स्ट्रैंड को ध्यान में रखते हम आगे चलते हैं. राइट, नाउ सी, एज दिस स्ट्रैंड ग्रोज टुवर्ड्स द फोक, दिस इज अ लीडिंग स्ट्रैंड. This strand grow away from the fork. So this one is one Okazaki fragment, this is other Okazaki fragment. As the strand grows, okay, so light brown color के ये पहले ऐड किए न्यूक्लियोटाइड और ये अभी ऐड हुए, that is dark brown. So it is proceeding towards the replication fork. This Okazaki fragment has attached to the old strand. This Okazaki fragment will get attached to this one. So this attachment of Okazaki fragment will be done with the help of enzyme ligase. So both the strands will continue to grow towards the fork. देखो, ये leading template will grow towards the 5:3 direction towards the fork continuously. Okazaki fragment पहले इधर से इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उधर से नीचे आया. So this lagging strand is synthesized discontinuously but ultimately towards the replication fork. So मैंने आपको डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर लिख के दिए थे. Leading template grow in 5:3 direction continuously towards the fork. One Okazaki fragment is synthesized in 5:3 direction away from the fork. But ultimately the DNA replication proceeds towards the fork. Continuous strand grows. Leading strand grows towards the fork continuously and lagging strand grows towards the fork discontinuously. यहाँ पे आप हमेशा गड़बड़ करते हो, तो अगर कोई डाउट है प्लीज कॉल मी. These are related to very important part of DNA replication. इस पे बहुत ज्यादा MCQ पूछे जाएंगे. डायरेक्शन तो फिर से रिपीट कर देती हूँ. With respect to template blue strand, DNA replication starts at 3' end. देखो यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे भी ओके, DNA replication ब्लू के 3' end पे शुरू हुआ. With respect to itself, न्यू स्ट्रैंड के हिसाब से DNA replication हमेशा 5' पे शुरू होगा. On leading template as well as lagging template का Okazaki fragment भी 5' पे शुरू होगा और 3' पे ग्रो होगा. With respect to template 3:5. With respect to new strand 5:3. Overall DNA replication will be always towards the fork, that is ultimately 5:3 direction. मैंने और एक डायरेक्शन आपको लिख के दी थी. ओपनिंग यहाँ पे शुरू हुआ है, देखो. ओके, कंसिडर द टेम्पलेट ब्लू स्ट्रैंड. ओके, सो ये लीडिंग स्ट्रैंड है तो ये लीडिंग टेम्पलेट है. ओके, देखो यहाँ पे लिखा है लीडिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड ऑन लीडिंग टेम्पलेट. सो लीडिंग टेम्पलेट ओपनिंग विल स्टार्ट हियर. ओके, तो लीडिंग टेम्पलेट विद रिस्पेक्ट टू ब्लू
Leading template open in 3:5 direction. Lagging template open in 5:3 डायरेक्शन. तो सब लोग एंजाइम के नाम और डायरेक्शन ध्यान में रखेंगे. ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन का वीकेस्ट एरिया है. जस्ट रिव्यू एंड locations of different enzymes. So rapid revision, replication fork. This black strand is parental DNA. This one double stranded helically coiled where DNA replication अभी शुरू नहीं हुआ. Okay, यहाँ पे देखो हेलिकेज, ग्रीन कलर का हेलिकेज is opening up DNA by breaking the hydrogen bond. Okay, so as black strands separate, you get replication fork. Okay, so single stranded DNA is acting as a template one parental DNA. Okay, lagging parental DNA, it is leading strand. Okay, leading parental DNA. Okay, so parental strand के 3' पे हमेशा DNA replication शुरू होगा. So here at 3' end of the template, its own 5' end पे RNA primer, ये wavy structure add होगा by the enzyme RNA polymerase. Then deoxyribonucleotides are added with the help of DNA polymerase. Right? अब यहाँ पे epsilon and delta ऐसे दो enzyme होते हैं. On leading strand, the enzyme working is DNA polymerase delta. Okay, which will continue to grow towards the replication fork following the helicase. Okay, other strand which will start synthesis bit late, its lagging strand. First Okazaki fragment के बनने के लिए RNA primer जुड़ेगा, फिर deoxyribonucleotide. यहाँ पे भी RNA primer जुड़ेगा, फिर deoxyribonucleotide. Two Okazaki fragments are connected to each other by enzyme ligase and the process will continue. Okay, so enzyme के नाम देख लेते हैं. This green ball, helicase. This purple ball, SSB protein. This pink one is DNA polymerase, right? And now the additional one, topoisomerase or gyrase. It is for relaxing the supercoil of DNA. जैसे DNA खुलता जाएगा तो ये साइड सुपरकॉइल होने की शक्यता बढ़ती है. तो वो सुपरकॉइल रिलैक्स करने के लिए ये टोपोआइसोमरेज काम करेगा. If supercoil accumulate over here, it will stop activity of helicase and two DNA strands will not be separated. If they are not separated, DNA replication will stop. Right? So this is how the enzymes and their respective locations, which are very important for MCQ. So at fork, which enzyme is working? Helicase. Which enzyme prepare RNA primer? Primase, DNA dependent RNA polymerase. Okay, for DNA replication, this pink ball DNA polymerase, ये हमने ध्यान में रखने ही है. And this purple ball SSB protein, DNA destabilizing protein, which will make the single strand of the DNA stable. These are the differences between leading strand and lagging strand. Leading strand, it is a replicated strand of DNA which shows continuous growth towards the fork. It is a replicating strand of a DNA which grows in short segments called Okazaki segments. Each segment growing in 5:3 direction. एक Okazaki fragment 5:3 direction में grow होता है. Then, second, the strand requires only one RNA primer. The strand requires number of RNA primer and the number of primer equals to number of Okazaki fragments. 3. For its synthesis, the leading strand does not require its DNA ligase. Here, it requires DNA ligase for joining of Okazaki fragments. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे, अगर हम ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन कंसीडर करते हैं तो डीएनए लाइगेज लगता ही है. Fourth point, the growth is in 5:3 direction continuously. The growth is 3:5 direction. For one Okazaki, for the growth, wait a second, lagging strand पे fourth point, the growth is 3:5 direction when we consider complete strand, but replication occurs
in 5:3 direction in short segment or Okazaki fragment. ये पॉइंट नंबर 4 थोड़ा गौर से देखेंगे. ओवरऑल स्ट्रैंड की ग्रोथ टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक होती है, सो 3:5 बोला जाता है. लेकिन अभी आपके बुक में सीधा सीधा लिखा है that one Okazaki fragment grows in 5:3 direction and the lagging strand grows discontinuously. See, fourth point we can write down. The leading strand is synthesized in 5:3 direction towards the fork, right? Lagging strand is synthesized towards the fork, but one Okazaki fragment is synthesized in 5:3 away from the fork. I repeat, Okazaki fragment grows away from the fork, but the lagging strand grows ultimately towards the fork. Right? Okay. Then, अब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए. 5. Leading template is also called continuous strand. Lagging template is discontinuous strand. 6. It is synthesis starts comparatively early. Leading strand synthesis starts comparatively early. Lagging strand synthesis starts comparatively bit late. 7 point. It is synthesized on leading template. It is synthesized on lagging template. सीधी सी बात. Okay, अब ये लास्ट पॉइंट उसके ध्यान दो. लीडिंग टेम्पलेट ओपन इन 3:5 डायरेक्शन. ओपनिंग की डायरेक्शन. लीडिंग टेम्पलेट ओपन्स इन 3:5 डायरेक्शन. लैगिंग टेम्पलेट ओपन्स इन 5:3 डायरेक्शन. ओपनिंग की डायरेक्शन. डायग्राम देख के काम करेंगे. Leading template open in 3:5 direction. Lagging template open in 5:3 direction. So these are the micro level differences as compared to leading strand and lagging strand. Please update the differences you have already written. Now this diagram will better explain the word semi-conservative DNA replication in comparison to conservative, and other word is dispersive. See, this you have discussed. Parental DNA red in color, 2 strands separated, new blue strands are synthesized, right? So in F1 generation, you have 2 DNA in which 50% old, 50% new. This is F2 generation, wherein again 2 parental strands separate and new addition is again of blue DNA, and this will be F3 generation, right? So ये पूरे प्रोसेस में 50% ओल्ड DNA स्ट्रैंड पे 50% नया DNA बन रहा है. तो इसको शब्द है semi conservative DNA replication, which is acceptable. But what are the other form? कैसा possible था साइंटिस्ट लोगों ने सोचा? It can be like this. It's 100% conservative and this is dispersive. Now look at the diagram. Conservative मतलब पेरेंटल DNA रेप्लिकेट हुआ, लेकिन दोनों स्ट्रैंड पेरेंटल के वैसे रहे और ये दोनों नए स्ट्रैंड से नया डबल स्ट्रैंडेड DNA बना. एंड सेम प्रोसेस कंटिन्यू, जिसमें ओल्ड डबल स्ट्रैंडेड पेरेंटल स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ रहा और नए से ये बने. ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. एंड दिस इज अब्रप्ट, कहीं पे भी रेड कहीं पे भी ब्लू, राइट? सो दिस इज डिस्पर्सिव मैकेनिज्म. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. दिस इज कंजर्वेटिव DNA replication, this is semi conservative, this is dispersive, but semi conservative is true and proved by Watson and Crick. These are the different types of DNA replications. आपके सिलेबस में सिर्फ सेमी कॉन्जर्वेटिव है, बाकी 2 शब्द आपके जानकारी के लिए ऐड किए गए हैं. See, this is the diagram explaining everything. But with reference to this diagram, please take out your class work
in which I have given you chart related to every calculation. अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज कॉल बैक, राइट. सी वो चार्ट और ये आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कॉन्सेप्ट और वो चार्ट के आधार पे आ सकता है. So what is Michelson and Stahl's experiment? The scientist worked with E. coli, again a bacteria, right, a media CSCl, and the nitrogen base which is used to synthesize new DNA was N15 N14 type. अब आप सब लोग ट्रेसर टेक्निक तो जानते ही हो. को रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम एक्सपेरिमेंट में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपेरिमेंट में वो एलिमेंट का जो मूवमेंट का पाथ है वो हमको समझेगा. मेल्विन केल्विन यूज C14, रूबेन कैमन यूज O18, so Michelson Stahl used N14 N15. So what they did, take a petri plate, added N15 nitrogen in the media, and N14 E. coli is grown on it for many generations. So obviously what happened, all the E. coli are having both the strands of DNA containing N15 N15. ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट के पहले तैयारी कर ली. Now they are having a E. coli, a bacteria which contain DNA with N15 N15 time, and experiment starts here. The E. coli bacteria used by Michelson and Stahl has double-stranded DNA. Both the strands are containing nitrogen base N15 N15, and this bacteria is grown on a media containing N14 type of nitrogen source. So obviously when the bacteria is growing, it will uptake the nutrient from the media N14 and synthesizes new nucleotides. You know, first step of DNA replication is synthesis of new nucleotide in late G1 after checkpoint, then activation of nucleotide, then cutting the DNA and addition of complementary nucleotide with the help of DNA polymerase. अभी हमने revise किया. So for that N14 nitrogen base is available. So bacteria is uptaking the N14, synthesizing new nucleotides, and now by using that new nucleotide on this N15 strand, which is a parental type, will divide into two N15 वाले red strand, और नए जो DNA का strand बना, new DNA strand which is synthesized, will be containing N14, which is represented here by green color. Right? So this is N15, 20 minutes is life cycle, okay, generation time. Then it will divide to produce two daughter DNA. Both are containing N15 as well as N14. N15 is previous, N14 newly added. Right? Okay, अब देखो. If this bacteria is taken and centrifuged, because both the strands of DNA are heavy, it will sediment at the bottom of the test tube. Here, as 50% old, 50% new, 50% heavy, 50% light, so it is having intermediate, it will sediment over here. And when this bacteria is again grown on a N14 containing media, red strand will separate here and green strand separate here, and obviously the newly synthesized strand will be containing N14, so that will be green colored new strands are synthesized. So see, this is a strand with N14 N14, N15 N14, N15 N14, N14 N14. So you are having three types of DNA. This one pure for N14, hybrid for N14 N15, right? Okay, and again pure. So when you allow its sedimentation, the N14 N15 will sediment in the middle, and N14 N15 will sediment in the middle, and N14 will sediment at the top because it's a light. Okay, so this is F1 generation, this is F2 generation. And because of this sedimentation in CSCl medium, cesium chloride medium में centrifugation किया गया. Okay, light and hybrid are separated. Okay, light DNA is this one, green, hybrid are red-green, are separated, and because of this density gradient centrifugation, you come to know that the hybrid will sediment in the middle, heavy will sediment at the bottom, and the lighter one will sediment at the top. Okay, so ये experiment है which proves आपको ये intermediate centrifugation करने के बाद
सेडिमेंट होने वाले डीएनए मिले. सो दिस प्रूव्स दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कॉन्जर्वेटिव. अब इसके आगे जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. तो इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन, इसको बोलेंगे F2 जनरेशन. F1 contain all hybrid, 50% old, 50% new. So 50% N15, 50% N14. So देखो यहाँ पे 100% N15, it is reduced to 50, हाफ हो गया. ओके, अब आपके पास हाफ N14 है, हाफ N15 है. अब N14 ही सप्लीमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली N14 प्रमोट होगा, N15 वही स्टेबल रहेगा. दैट विल बी 2 स्ट्रैंड विल बी रेड. आप कितने भी जनरेशन आगे जाओ, 2 strands will be red, that is N14, 2 strands will be red, that is N15, N15, और नए जो बनेंगे वो ग्रीन बनेंगे N14 वाले. ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर चार्ट में लिख के दिया था that the percentage of green, that is N14, will go on increasing. ओके, यहाँ पे 0%, यहाँ पे 50%, राइट. फिर यहाँ पे देखो टोटल आपके पास 8 स्ट्रैंड है, 8 में से 6 ग्रीन है, 2 ही रेड है. तो रेड हमेशा 2 ही रहेंगे क्योंकि आप N15 प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हो, और जो भी डबल अमाउंट होता जाएगा वो होता जाएगा ग्रीन का, राइट. सो एवरी टाइम नंबर ऑफ डीएनए, एवरी टाइम number of DNA strands will double up. Number of DNA strand will double up. Among that, 2 will be always fixed. That is red and 15 and 15. तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था. Total number of DNA equal to 2 to the power n. Number of generation. First generation 2 to the power n. So you are having 2 double-stranded DNA. 2 to the power 2, you are having 4 double-stranded DNA. Among the 4, 2 are always hybrid. So new will be 2 to the power n minus 2, राइट. अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करते हैं तो, या फिर अगर सिंगल स्ट्रैंड की बात करते हैं तो इफ यू आर हैविंग 4 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मीन्स यू आर हैविंग 8 strands of DNA, among which 2 will be N15 and remaining will be always new one N14. ओके, सो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिए वो देख के आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं. Understood? So please go through your classwork. If having any doubt, please call me. Now, DNA replication in prokaryotes. You know prokaryotic cell have double-stranded DNA, 1 in number. Bacteria has 1 genomic DNA. Extra chromosomal DNA plasmid can be in any number, but genomic DNA, main DNA is 1. It is always 1 in number, which is double-stranded without histone. And its packaging is not very specific as we have discussed in eukaryotes. It's loosely packed with the help of non-histone protein. Okay, so circular shape, 1 in number, absence of histone are the characteristic feature of prokaryotic genetic material. Replication method is same. It has origin, but again the number of origin in prokaryotic cell will be 1. So this is double-stranded DNA with 1 origin. At origin, the process of initiation will be taking place. Okay, cutting the DNA and uncoiling. Right? Uncoiling शुरू हो गया. Okay, so देखो यहाँ पे cut हो गया. Then synthesis of RNA primer has started in the cytoplasm, and now the DNA start uncoiling. So during uncoiling, it appears like a English alphabet theta. So it is theta replication. Okay, so ये yellow color के ball मतलब हेलिकेज है. आरएनए प्राइमर बन चुका है, न्यू न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो चुके हैं. डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 काम करेंगे. प्रोकैरियोट्स हैव डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3. यूकैरियोट हैव डीएनए पॉलीमरेज अल्फा बीटा डेल्टा एप्सिलॉन, राइट. ओके, सो यहाँ का बीटा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 2 1 2 3 अल्फा बीटा डेल्टा, ऐसे ध्यान में रखेंगे. सो 2 इज ऑल्सो performing DNA polymerization process but deadly slow, so it's not effective. So DNA polymerization in prokaryote is mainly done by DNA polymerase 3, and in eukaryote it is DNA polymerase delta and epsilon. Okay, अब लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में मैंने आपको बोल दिया था. Okay, डिफरेंसेस में भी हम ये ऐड कर सकते हैं that delta is working for the synthesis of
leading strand. DNA polymerase delta is working for synthesis of leading strand, and DNA polymerase epsilon is working for synthesis of lagging strand. But again, it is not important and not there in your syllabus. I'm just revising what already talked to you. इसलिए मैंने differences में आपको कुछ बोला नहीं. Right? चलो, तो यहाँ पे theta replication शुरू हो गया. Yellow is the helicase enzyme which is unwinding DNA bidirectionally, and by synthesizing RNA primer here, DNA polymerase 3 will start working. Okay, so DNA polymerization शुरू होगा bidirectionally. Okay, फिर से single strand binding protein and synthesis of new DNA will continue, and you get ultimately 2 strands of DNA. ये दोनों strand separate हो जाएंगे. दोनों strand पे additional नया DNA molecule बनाया जाएगा, and then you get similar type of 2 DNA double stranded circular DNA. तो हमने prokaryotic DNA replication और eukaryotic DNA replication इसके differences भी लिखे थे. Prokaryote has one origin, eukaryote has many origins. Prokaryotes enzymes, as I said, DNA polymerase 1, 2, 3 work in prokaryotic DNA replication, alpha, beta, delta, epsilon in eukaryotes. DNA replication in prokaryote occur in cell cytoplasm. DNA replication in eukaryote occur in nucleoplasm. Both are bidirectional, but one point you can say that theta replication can be unidirectional. Theta replication can be unidirectional. Eukaryotic DNA replication is always bidirectional. Right? Okay. चलो क्लास वर्क निकालो. आपके पास कितने डिफरेंसेस है वो एक बार चेक कर लो. See, we have completed packaging of DNA in eukaryotic cell. Eukaryotic cells are having very systematic packaging, as we discussed. Double-stranded linear DNA coiled to produce nucleosome fiber, solenoid fiber, chromatin fiber, and chromosome. It systematically uncoils during the process of DNA replication, systematically coils in interphase, in prophase, thickly coiled in metaphase, chromosome state का रहेगा, और टेलोफेज में फिर से अनकॉइलिंग होगा पार्टली, और सेल के अंदर छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इट कैन अकोमोडेट इटसेल्फ. इन प्रोकैरियोट्स आल्सो देयर इज स्पेसिफिक कॉइलिंग, but it is not very systematic. It needs coiling. Why? Because size of average E. coli bacterial cell is 2 to 3 mu, in which 1.1 millimeter DNA should accommodate. आप जानते हो ह्यूमन सेल में कितने मीटर का डीएनए है? छोटे से सेल में इतने मीटर लंबा डीएनए अगर अकोमोडेट करना है तो कॉइलिंग होना ही चाहिए. प्रोकैरियोट में भी सेल और छोटा है तो डीएनए में पैकेजिंग होना जरूरी है. सो दिस इज कंप्लीटली अनकॉइल्ड डीएनए. इट इज कंप्लीटली अनकॉइल्ड डीएनए जिसका लेंथ अराउंड 1100 म्यू माइक्रोन होता है. ये जब कॉइल्ड होता है फर्स्ट लेवल का कॉइलिंग, इट विल फॉर्म 350 म्यू माइक्रोन. Okay, now this one will form loops. Okay, this will form loop. For loop and stability, loop formation and stability, these black colored lines are called RNA connectors. Okay, so loop हो गया, RNA ने इसको यहाँ पे hold कर लिया तो ये loop ऐसे रहेगा. Now this individual loop is coiled around itself. Okay, so that it will give you this structure. So 30 mu micron will be coiled to form 2 mu micron. For this packaging, it is also using a basic protein, but it is not histone. So it is using some other type of basic protein for packaging. आपको उसका नाम नहीं है syllabus में, so not needed for discussion. This diagram is only there in state board, not even in NCERT. So जितना book में है उतना ही देखेंगे. So first level coiling, loop formation. Loops are stabilized by RNA character. Individual loop is coiled further. ये loop फिर से खुद के साथ coil हो गया. Okay, that will be using different types of proteins, basic protein, right? Now this is a partly coiled chromosome like structure which is present in a non-dividing cell in a form of nucleoid. Because it is not having nuclear membrane,
And separate compartment, it's not having covering, so it is a naked DNA. If you treat this DNA with the RNase enzyme, मतलब आप RNA तोड़ देंगे, ये जो connectors है RNA के ये तोड़ देंगे, so see one loop will get separated. And if you treat it with DNase enzyme, तो ये जो coiling है इधर का individual loop का, वो यहाँ पे digest होगा. Okay, so this is just a confirmation that RNA is helping in binding. RNA, if it is digested, it will unloop itself, it will uncoil itself like this. If DNAs are digested, it will uncoil like this. So this is packaging of nucleoid prokaryotic DS circular DNA so that it can accommodate in a tiny space.